morning, my senior KG. I hope you all are fine. I am Malin ma'am from Market and Drama, and today I am going to tell you about Dussehra. Do you know when we celebrate Dussehra? After celebration of 9 nights, we celebrate 10th day as Dussehra. And on Dussehra, we eat fafda and jalebi. Dussehra is also called as Vijayadashmi. Now, there is a short story on Vijayadashmi. Vijayadashmi. Vijayadashmi is one of the major festivals celebrated by Hindus. We celebrate Vijayadashmi, victory over an evil. Long ago, there was a demon called Mahasasur. He was born like a buffalo. That's why he was called as महिषासुर। एक शक्तिशाली राक्षस होने के नाते महिषासुर ब्रह्मांड के तीनों लोकों को जीतने के लिए बेताब था। अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए He started to pray to Brahmaji and he started saying Om Brahmadevaya Namaha, Om Brahmadevaya Namaha. He prayed for many years, even during winter and rainy season, without eating and drinking anything. Finally, his prayers were heard and Brahmaji appeared in front of him. And Brahmaji asked to him, "What wish do you want?" तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि ब्रह्मांड में कोई भी आदमी उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसे भरोसा था कि कोई भी औरत उससे लड़ नहीं सकती। After receiving his wish from Brahmaji, he started torturing everyone in Brahmand. Even Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiv were also not able to handle him. फिर उन्होंने सोचा कि एक औरत ही महिषासुर को मार सकती है, तो ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके माँ दुर्गा का आविष्कार किया। माँ दुर्गा एक या दो नहीं बल्कि पूरे 18 हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों को माँ दुर्गा को भेंट स्वरूप दिए। ऐसे भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया और भगवान इंद्र ने अपना वज्रांग दिया। ऐसे कई सारे शक्तिशाली शस्त्रों को लेकर माँ दुर्गा एक शेर पर चढ़कर महिषासुर से लड़ने के लिए निकल पड़ी। Mahishasur was also ready to fight with Durga Ma with his army. Mahishasur changed many faces like lion, elephant and buffalo and fought with Durga Ma. Durga Ma and her lion killed all the army of Mahishasur. This battle continued till 9 days. 9 दिनों के बाद 10वें दिन पे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ये युद्ध 9 दिनों तक चला, इसीलिए इसे नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और 10वें दिन पे माँ दुर्गा का महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त होने के कारण यह दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। Hope you enjoyed the story of Vijayadashmi. So enjoy your Dussehra, stay with your family, don't go out, take care, bye bye.